Hello, dear students. I am Dharamveer. I welcome you all to my channel. प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं ट्राइंगल्स पर, जो कि पहले भी बनाई है। सो इन कंटिन्यूएशन विद दैट वीडियो आई हैव अनदर वीडियो फॉर यू ऑन ट्राइंगल्स. So questions I have written on the board, that is, in figure, side AB and AC are extended to points P and Q. This side AB extended to point P and other side AC extended to point Q respectively. Also angle PBC is lesser than angle QCB. QCB means this angle is smaller than this angle. Angle PBC is smaller than angle QCB. So you have to prove that AC greater than AB. AC greater than AB. Solution. In triangle ABC आपको गिवन है एंगल PBC इज ग्रेटर देन एंगल QCB. एंगल PBC इज लेसर देन एंगल QCB. नाउ मैं यहाँ पर एंगल लिख रहा हूँ 1 और इधर लिख रहा हूँ 2. सो एंगल PBC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. Why? Because this angle and this angle form the straight angle linear pair. And angle QCB plus angle 2 again will be 180 degree, again linear pair. So it is equation 1, equation 2. So from 1 and 2, from equation 1 and 2, so angle PBC plus angle 1 is equal to angle QCB plus angle 2. So both the equations are equal to 180 degree. Therefore the left hand side of both equations are equal. But you know that this angle PBC is lesser than this angle. Therefore the angle which is added to angle PBC will be greater than this angle. Therefore angle 1 is greater than angle 2. Why? Because angle PBC is lesser than angle QCB. अब क्या होगा जब इसको कंपेयर करें, मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर एंड दिस एंगल इज स्मॉलर. सो इन ट्राइंगल ABC, so angle 1 is greater than angle 2. We have proved angle 1 is greater than this angle is greater, this angle is smaller. So therefore the side AC will be greater than side AB.
रीजन साइड opposite of greater angle is greater, hence proved. That was to be proved. यही आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में पूछा था. सो नाउ वी टेक सेकंड क्वेश्चन. Yes, in the given figures, I have next question for you. In the given figure, angle B is less than angle A. And this angle is smaller than angle A. And angle C, this one angle, is smaller than angle D. So you have to show that the AD side from A to D, this side is less than BC. The side AD is smaller than BC side. In triangle, now take this first triangle, this is second triangle. In triangle ABO, angle B is less than angle A given. Therefore the side opposite angle B, एंगल्स के अपोजिट कौन सी साइड पड़ती है? AO. Therefore side AO is less than side, अब A के अपोजिट साइड कौन सी पड़ती है? OB. The side reason sides opposite greater angle are greater. अगर इसका अपोजिट देखो तो एंगल A is greater than B, therefore side OB is greater than side OA. We are writing in the inverse way. Similarly, in triangle OCD, the angle C is smaller. Angle C is smaller than angle D given. Therefore, OD, side OD will be smaller than side OC. Same reason given above. Equation number 2. So add 1 to 2. So adding 1 and 2. साइड AO में आपने ऐड करनी है साइड OD. So AO plus OD will be less than OB plus OC. अब इन दो साइड से मिलके कौन सी साइड बनती है? मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ स्पेस के लिए. इन दोनों साइड्स को A और OD को मिला के कौन सी बनी है? साइड AD. इन दोनों को मिला के बन गई AD लेस देन साइड BC. हैंस प्रूव्ड. यही इसमें आपको प्रूव करना था कि एक साइड
यानी ए डी जो है वो बी सी से लेस देन है, ये इसमें प्रूव करना था। सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चंस। So here is the second question. Next question. In AB and CD are respectively the smallest and the longest sides of quadrilateral ABCD. This is a quadrilateral ABCD having 4 sides. Out of these 4 sides, this AB is this side AB is the smallest, whereas the side CD is the longest. You have to prove angle A is greater than angle C. This one angle is greater than angle C, whereas angle B, this one angle is greater than angle D. So these are 2 things that you have to show. Now I have made the construction. So construction is this. So before proceeding the solution for proof, so join A and C. So this will be the diagonal A and C, the diagonal of the quadrilateral, and other diagonal is BD. So join A with C and B with D. So both the diagonals are joined together. In this way, angle A has 2 parts, angle 1 and angle 3. Similarly, angle C has 2 parts, angle 2 and 4. Whereas angle B has 2 parts, 5 and 7. And angle D has 2 parts, angle 6 and 8. Now let us take, so I have told you the constructions. So now I am starting the proof for this. So in triangle ABC, this one triangle, this has 3 sides, AB side, BC side and AC side. Out of these 3 sides, AB is the smallest. That is given in the questions. Side AB is the smallest side. Therefore, so अब ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल पड़ता है? एंगल 2। और बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल पड़ता है? एंगल 1। सो जब व्हेन ए बी इज ग्रेट स्मॉलर, द बी सी विल बी ग्रेटर। देयरफॉर साइड बी सी विल बी ग्रेटर देन ए बी। दिस साइड is greater than AB, because we have written above AB is the smallest, so BC will be greater than AB. So angle opposite to BC, that will be angle 1. Angle 1 is greater than angle 2. Angle opposite the bigger side is greater. तो ये साइड क्योंकि बड़ी है, इसके सामने का जो एंगल है एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है। नाउ वी टेक अनदर ट्राइंगल ACD, so let it be 1. Equation 1. In triangle ACD, CD
side CD is the largest. ये भी गिवन था and this was also given in the questions. So side CD is the largest. This is the triangle, one side AD, other side CD, and the third side is AC. So angle opposite this fourth side CD के opposite angle कौन सा है? Third. Therefore angle 3 is greater than angle 4. Same reason written above. So adding 1 and 2, angle 1 plus angle 3 will be greater than angle 2 plus angle 4. एंगल 1 और 3 को ऐड करके कौन सा एंगल बन जाता है? एंगल. Therefore angle A will be greater than angle C. So that was to be proved. One part we have proved. Angle A is greater than angle C. Now we have to prove the second part, angle B and D. So we have to choose another triangles. There are 4 triangles. So triangle ABC and triangle ABC and triangle ACD we have taken. Now we have to take other 2 triangles. One triangle this is third triangle, and this is the fourth. Now I am marking one triangle 1, triangle 2 for this. Now this is third triangle and this is the fourth. So I erase first and second. So you have to just look for the third and the fourth triangle. So in triangle third triangle ABD, here the AB side AB is the smallest side given in the question. So AB is the smallest, then AD will be the largest of these 3. The AD will be greater than AB. So therefore angle 5 will be greater than angle 6. So AD will be greater than AB. So angle opposite AD, angle 5 is greater than angle 6. Angle opposite greater side is greater. This is third. Now take fourth triangle, triangle BCD. So CD, side CD is the largest, longest. I would use longest. Therefore angle opposite to CD will be 7 and angle opposite to BC will be 8. So angle 7
will be greater than angle 8. Same reason. So let it be 4. So adding 3 and 4, angle 5 plus angle 7 greater than angle 6 plus angle 8. तो 5 और 7 को ऐड करके बन गया एंगल 5B और ये हो गया D. Hence proved. So you have proved both the parts. आपको क्वेश्चन में ये प्रूव करना था एंगल A इज ग्रेटर देन C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन D. So let us take another question. So here is the next questions. In figure I have drawn already. In figure PR, the side PR is greater than side PQ. This side PR is the longer side and PQ is smaller side, and PS bisects angle QPR. This angle QPR को ये जो है लाइन सेगमेंट ये इसको बाइसेक्ट करती है. एंगल 1 विल बी एंगल 2. सो यू हैव टू प्रूव दैट एंगल PSR दिस वन एंगल will be greater, this angle will be greater than angle PSQ, this angle. Solution. In triangle PQR, the side PR is greater than side PQ given. Therefore, angle Q will be greater than angle R. Angle opposite longer side is greater. Now add further. So angle 1 is equal to 2. Angle 1 is equal to angle 2. Why? This is a bisector because PS is a bisector. Bisector of angle QPR. Now adding 1 to angle Q, therefore angle Q plus angle 1 will be greater than angle R plus angle 2. So when we say that angle Q is greater than angle R, but 1 and 2 are equal, so when we add 1 to angle Q, that will be greater again from the as compared to the angle R plus angle 2. So the sum of these two angles will be greater than sum of the angle 2 and R. But you know that angle 1 plus angle Q will be equal to angle this one angle. Why? देखिए इस तरीके से बनाया है फिगर. अगर हम ऐसे देखें कि ये ट्रायंगल हमारी PQS, उसमें ये एंगल 1 हुआ है ऐसे, ये एंगल Q है, तो ये जो एंगल है बाहर वाला
So that is the exterior angle. The exterior angle of the triangle is always equal to the sum of the interior opposite angle. कि ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का और ये किसके बराबर होता है, इन दो एंगल्स के सम के बराबर. तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे बट एंगल क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू एंगल पी एस आर, exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angle. यानी ये जो मैंने अलग से फिगर में आपको शो कर दिया कि ये जो एंगल है ये इन दोनों के एंगल्स के जोड़ के बराबर है. सिमिलरली इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करें तो कौन सा एंगल बनेगा, इधर वाला. सो एंगल आर प्लस 2 इक्वल टू एंगल पी एस क्यू. सेम रीज़न, क्योंकि अब की बार हम ये ट्रायंगल देखेंगे ऐसे, इसको ऐसे देखें, अगर ये इसकी साइड आगे आ गई तो इधर वाली ये जो साइड है ये वाली इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगी. सो देयरफॉर so let it, I mark it 1 and mark it 2. So from 1 and 2 जब हम ये कहते हैं कि ये एंगल इससे बराबर है, बड़ा है ना, ये इसका जोड़ इन दोनों के जोड़ के से बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी जगह हम लिख रहे हैं एंगल पी एस आर. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 so angle PSR will be greater than angle PSQ. That was to be proved, hence proved. So another question after this. Here is the next question. Show that all the line segments drawn from a given point, not on it, the perpendicular line segment is the shortest. Just see the figure. You are given line segments drawn from a point. अब ये पॉइंट है P, हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क कर रखा P. इस P पॉइंट से जो भी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं टू ए गिवन लाइन सेगमेंट. अब जैसे ये लाइन सेगमेंट हमने लिया, ये लाइन है L और इस लाइन पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, एक PM एक PN फ्रॉम पॉइंट व्यू P, वेयर PM इज द परपेंडिकुलर. So solution, L is a line segment. Actually it's a given line having arrow on both sides. So this is not a line segment, so it's a line. L is a line, given line, and P is a point not lying
नॉट लाइंग ऑन एल, यानी ये जो लाइन थी, ये जो पॉइंट पी है इससे ऊपर है या नीचे, जहाँ मर्जी लें, लेकिन नॉट ऑन द गिवन लाइन। पी एम is a perpendicular. PM is a perpendicular to line L. इस लाइन L पर ये जो PM है ये परपेंडिकुलर है, और उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर के अलावा और भी लाइन खींच सकते हो। या हमने एक लाइन तो परपेंडिकुलर ले रखी है वाली, और एक लाइन ये ड्रॉ कर रखी है अलग से। इसके अलावा भी आप जितनी चाहे लाइंस खींच सकते हो। ये नहीं है कि आपने सिर्फ 2 किए हैं तो 2 से ही आपको प्रूव करना है। सो यू कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ लाइंस, बट इन क्वेश्चंस you were asked only about 2 lines. So PM perpendicular L and N is any other point not on M. That this N doesn't lie on M. It is situated on any other place other than M. So in triangle PMN, so this has become a triangle, right triangle. In triangle PMN, PM perpendicular L, therefore angle M is equal to 90 degree. So this angle, the angle N is an acute angle. You already know that in a triangle the sum of the 3 angles is equal to 180. So out of these 3 angles, when one angle is 90 degree, the other 2 angles, there will be, the sum of those will be 90 degree, and the both will be acute angle. So this angle N is a acute angle. So therefore M is greater than angle N, or side PN is greater than side PM. Side opposite greater angle is longer, or side PM is shorter than side PN. Means the perpendicular to line L is always shortest than any other line segment. Any other line segments, वैसे आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, line segment drawn from point P. So hence proved. So that was to be proved. इसका मतलब ये हुआ कि
जो किसी भी पॉइंट से बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसी पॉइंट से कोई और लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो सबसे छोटा होगा दूसरे लाइन सेगमेंट्स के इन कंपैरिजन। सो इसमें हमने यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए थे, एक PM दैट इज परपेंडिकुलर एंड अदर दिस वाज अ PN line segment drawn from point P. So from point P to external point, इससे PM और PN दो line segment were drawn and you have to prove this is the shorter segment and this is the greater segment. So dear students, I have given you the solutions for most of the questions from this exercise, and so I request you to go through this video which are related to this chapter, 7th chapter, that is the triangles. So I assure you that you will be able to understand them well when you will repeatedly revise them and will be able to solve the other questions which were not given, which were not solved by me. So I request you all again to share the video, like the video and press the bell icon. Thank you. Have a nice day.